Hi guys, welcome to BYJU'S exam prep. I'm 𝗟𝗲𝗴𝗃 𝗏 and as we discussed yesterday, you must have seen my the advice that I was giving to that little girl. We are going to discuss the passage on a topic which is currently trending, the telecast ban that has been lifted on or from MediaOne channel by the Supreme Court. Now, MediaOne channel was a Malayalam channel and it was banned from telecasting its news because of a certain controversy. We had discussed this last year. Now, the Supreme Court finally has, overruled the High Court's decision and the ban has been lifted. Now, it concerns a very important and a significant right or a guarantee that is provided to us by the Constitution of India, and that guarantee comes in the form of Article 19. So Article 19 gives us the guarantee or the freedom of speech. Okay. The thing is that Article 19 is wide in its own scope. Like, we have freedom of speech, but the press or the journalistic freedom is not really awarded expressly. So by various judgments, various case laws, Supreme Court has incorporated or interpreted Article 19 so as to include freedom of press as well. So Article 19 includes freedom of press. And this was the right that was cited by the Supreme Court when the ban was lifted. Good evening, guys. Good evening. How are you all? Okay, so all of you who are practicing regularly these passages through these sessions are going to benefit a lot. इनमें से अगर 2 पैसेज भी अगर आ जाते हैं तुम्हारे एग्जाम में, तो तुम हमेशा इस चीज को याद रखोगे कि मैम ने करवाए थे, और जो नहीं आते हैं वो भी हमेशा इस चीज को याद रखेंगे कि मैम ने करवाए और हमने नहीं किए. राइट? तो मैं तो अपनी तरफ से सारा काम कर रही हूँ. अब आप ही लोग पढ़ना नहीं चाहते तो क्या करें? Okay, so one more announcement. ये तो हो चुकी है actually, so that is not even an announcement anymore. ये भी हो चुका है. Old announcements, my mistake. Let us start. बहुत time नहीं लगाना है. You're not supposed to take too much time, by the way. Ruled against the telecast ban. Ban को हटा दिया गया है. Imposed by the union government on Malayalam news channel MediaOne. Supreme Court heavily criticized the High Court's approach in upholding centre's decision solely on the basis of the sealed cover document submitted by the Ministry of Home Affairs. ठीक है, ये इशू था कि सील्ड डॉक्यूमेंट्स कुछ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पे थे जिसकी न्यूज MediaOne चैनल ने रिलीज कर दी. ये सील्ड कवर है, ये है, वो है. Okay, done everyone? Okay, moving on. High Court did not disclose the reasons for the denial of security clearance. There is no explanation of what weighed in the mind of the High Court, leading it to hold that the denial of clearance was justified, despite observing that the nature and gravity of the issue is not discernible from the files. Okay? Done? No? Yes? 4 ही lines हैं. I'm hoping that you are done. Now, the seal cover procedure followed by the single judge and the division bench, it's not belch, it's bench, have necessarily rendered the appellant's right to remedies, which has been described as the heart and soul of the Constitution and a basic feature of the Constitution, a dry parchment. The non-disclosure of reasons for the denial of security clearance, which is the sole ground for denying, ये था reason, security clearance के बिना, मतलब security clearance नहीं था, उन्होंने रिलीज कर दिया. ये sole reason था उनको license renew करने की permission deny करना. And the disclosure of relevant material only to the court in a seal cover has rendered the appellant's procedural guarantees under the Constitution
Is that even a word? This is a word. This means useless. In case you are wondering. Okay, this means useless. Okay, moving on. The judgment emphatically stated that the state cannot deny the rights of the citizens by merely raising the plea of national security. The state must satisfy the court that national security concerns are actually involved. ये बेस करता है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे कि जस्टिस should not just be done. It seen to be done. ठीक है, जस्टिस शुड नॉट जस्ट बी डन, इट मस्ट सीन टू बी डन. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि बस तुमने जस्टिस कर दिया इतना काफी नहीं है. तुम्हारा जस्टिस ऐसा होना चाहिए कि वो दिखाई दे, एविडेंट हो. इसलिए नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो डिमांड करते हैं कि कोई भी अगर जजमेंट आए तो वो एक रेशियो के साथ आए. अगर कोई डिनायल है तो रीजन के साथ है, कोई परमिशन है तो वो रीजन के साथ है. अगर आप राइट एनफोर्स कर रहे हैं तो रीजन देंगे, अगर राइट रिजेक्ट या डिनाई कर रहे हैं तो भी रीजन देंगे. ठीक है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन भी अगर आपने कंसिडर करके राइट डिनाई कर दिया कि मोरालिटी इन्वॉल्व है, नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, तो आपको समझाना पड़ेगा कि नेशनल सिक्योरिटी क्यों इन्वॉल्व है, मोरालिटी किस तरह से कंसर्न है, वो रेस्ट्रिक्शन इन्वोक हो गया तो क्यों हुआ. इट हैज टू बी अ रीजनड ऑर्डर. इस रीजनड ऑर्डर को स्पीकिंग ऑर्डर भी कहते हैं. एंड एवरी जजमेंट नीड्स टू बी स्पीकिंग एज पर द नेचुरल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस. ओके, अब ये जो है इसका लैटिन मैक्सिम भी है एक, और ये तुम्हारा होमवर्क है. लैटिन मैक्सिम ऑफ दिस इज योर होमवर्क. मेंशन बिलो इन द कमेंट्स व्हेन यू फिगर इट आउट. चलो आगे बढ़ते हैं. Other than merely claiming that national security is involved, both in the affidavit that was filed before the High Court and in the submissions before us, the Union of India made no attempt to explain how non-disclosure would be in the interest of national security. The Union of India has adopted this approach in spite of reiterations by this court that judicial review would not be excluded in a mere mention of the phrase of national security. The state is using national security as a tool to deny citizens remedies that are provided under the law. This is not compatible with the rule of law. पढ़ लिया सबने? Such a beautiful statement. कभी कभी सुप्रीम कोर्ट बड़ी प्यारी बातें कह देता है, नहीं पढ़ के अच्छा लगता है उन्हें कि चलो हाँ अभी भी विजडम मौजूद है जुडिशरी में. Shall we move on? Okay. An independent press is vital for the robust functioning of a democratic republic. Its role in the democratic society is crucial for it shines a light on the functioning of the state. क्या बात है? The press has a duty to speak truth and present citizens with hard facts, enabling them to make choices that prepare democracy in the right direction. The restriction on the freedom of the press compels citizens to think along the same tangent. A homogenized view on issues that range from socio-economic polity to political ideologies would pose grave dangers to democracy, it said. The judgment meaning.
अभी डन, पढ़ लिया हमने, आगे बढ़ जाएं। मैंने तो पढ़ लिया, काफी लंबा है नहीं पैसेज। द क्रिटिकल व्यूज ऑफ द चैनल MediaOne on policies of the government cannot be termed anti-establishment. The use of such terminology in itself represents an expectation that the press must support the establishment. बिल्कुल सही बात है कि आप गवर्नमेंट के फेवर में नहीं बोल रहे हैं, मतलब आप चाहते हैं कि मीडिया जो है वो गवर्नमेंट के फेवर में ही चलती रहे, वरना आप उसे बंद कर देंगे। The action of the Ministry of Information and Broadcasting by denying your security clearance to a media channel on the basis of views which the channel is not constitutionally entitled to hold produces a chilling effect on free speech and in particularly on press freedom. Moving on. This is extracted from live law. Now question number 1. Which of the following aspect has not been discussed in the passage? Telecommunication ban, sealed cover documents, democracy, press freedom. काफी easy है। इनमें से कौन सी चीज डिस्कस नहीं हुई है पैसेज में? डिस्कस नहीं हुई है, नॉट बीन डिस्कस। देखो, ओके, एंड द करेक्ट आंसर इज वन वर्ड आंसर है ए, टेलीकास्ट बैन। टेलीकम्युनिकेशन बैन नहीं डिस्कस हुआ है, वी आर टॉकिंग अबाउट टेलीकास्ट बैन। ओके, टेलीकम्युनिकेशन और टेलीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग सब अलग अलग चीजें बाय द वे। So telecast ban has been discussed but not telecommunication bans, right? So A is the correct answer. Very good, those of you who answered. According to the author, what is described as the heart and soul of the Constitution and a basic feature of the Constitution? Seal cover procedure, right to remedy, single judge bench, division bench. This is too easy, guys. मतलब हद ही होगी. So the correct answer to this is everyone. What do you think? It's B. Article 32. Ambedkar ने कहा है ये. Dr. B.R. Ambedkar mentioned Article 32 as the heart and soul of the Constitution. In case you are wondering, so B is the correct option, right? Which of the following plays a vital role in functioning of a democratic republic? Independent press, democratic society, judicial review, national security. अभी पैसेज में अभी बात की गई है कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी को हेल्दी वे में पेव करने के लिए प्रेस की इंडिपेंडेंस जरूरी है। तो करेक्ट आंसर इज इंडिपेंडेंट प्रेस। वेरी गुड, दोज ऑफ यू हु आंसर्ड ए, इट इज ए। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये लंबा है। ABC कंपनी ऑपरेट्स a nuclear power plant. It is seeking to renew its license to continue operations, for which it submits all necessary documents and pays the requisite fee to the licensing authority. However, the authority denies the license on the grounds of inadequate security clearance. ABC appeals the decision in court, but the court is given access to relevant material only in a sealed cover and appellant is not privy to it. Based on the material provided in the sealed cover, the court uphold the authority's decision of denial of license. ABC claims that the decision to be violative of their constitutional rights. Advise the grounds on which ABC can challenge the judgment. बिल्कुल जो हुआ है MediaOne चैनल के साथ वही बेचारी ABC कंपनी के साथ भी हो गया है, तो जो रेमेडी उनको मिली है वही इनको भी मिल जाएगी. The seal cover procedure has rendered ABC's right to remedy meaningless. This is absolutely incorrect. Non-disclosure of reason have rendered ABC's right to remedies and procedure guarantee under the Constitution meaningless. Okay, the seal cover procedure have rendered ABC's right to procedural guarantee meaningless. All of the above. क्या सही है? ये सही है ना? B is the correct option. हाँ? What? अरे हाँ, B सही है. All of the above, not B. सारे ही सही हैं. सील कवर प्रोसीजर है ही क्यों? राइट, आई वॉज रॉन्ग. D is the correct answer. तो जिन्होंने D आंसर किया वो सही है. राइट, सील कवर प्रोसीजर नहीं होना चाहिए. प्रोसीजरल गारंटी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, रेमेडीज वगैरह सब मीनिंगलेस हो जाती हैं.
और नॉन डिस्क्लोज कर, अगर डिस्क्लोज ही ना करो रीजंस, तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी और ही मीनिंगलेस हो जाती है। सारा ही स्टेटमेंट सही है पैसेज के हिसाब से। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 5, again a very lengthy factual scenario. Why media organization is seeking to renew its broadcasting license, for which it submits all the necessary documents and pays the requisite fee to the authority. However, the authority denies on grounds of this. Why challenges ki spelling galat hai the decision in court. Court is given access to some part of the relevant material only in a sealed cover. Appellant not privy based on the material not provided in the sealed cover. The court upholds the authority's decision of denial of the license. अब ये चैलेंज हो जाता है ऑन ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है, तो जो अथॉरिटी का डिसीजन है या फिर जो लाइसेंस डिनायल है वो सील कवर के मटेरियल के बेसिस पे नहीं किया गया है। ठीक है, दैट इज कोर्ट्स ओन डिस्क्रेशन, अपने सूझबूझ पे किया गया है। तो बताओ वाई मीडिया के पास क्या है जजमेंट को चैलेंज करने के लिए? सेम थिंग। एनीवन केयर टू आंसर, केयर टू टेक अ गेस? यहाँ पे भी डी है। ठीक है, क्योंकि सील कवर को जब रेफर ही नहीं किया है तो फिर ये सारे के सारे इररेलेवेंट हो जाते हैं। The court did not really refer to the sealed cover. मैंने underline भी किया था। The court relied on its own wisdom to deny the license. So the sealed cover has nothing to do with it. तो वो इशू में है ही नहीं, right? D is the correct option. Question number 6. The state of 𝗖𝗄𝗏 in India has detained a group of individuals ABCD, claiming that they pose threat to national security. However, the individuals claim that their detention is illegal and a violation of their fundamental rights. 𝗖𝗄𝗏 argues that the detention is necessary to protect national security and prevent potential harm to citizens. Other than merely claiming that national security is involved, the state made no attempt to explain how non-disclosure would be in the interest of national security. ABC challenged their detention via petition in the court. अब ABCD को सक्सेस मिलेगी कि नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल मिलेगी भाई। अभी पैसेज में क्या बात हुई है कि अगर तुम बता भी रहे हो, इफ यू आर इवन साइटिंग अ ग्राउंड ऑन विच यू आर रेस्ट्रिक्टिंग समथिंग, यू नीड टू जस्टिफाई द ग्राउंड। इफ यू आर सेइंग कि भाई हम इस ग्राउंड पे आपको ये नहीं दे सकते, तो तुम क्यों कह रहे हो कि ये ग्राउंड एग्जिस्ट कर रहा है? तुम कह रहे हो नेशनल सिक्योरिटी की वजह से चारों को डिटेन कर दिया है, तो कौन सी हरकत थी उनकी ऐसी जिसने नेशनल सिक्योरिटी को इट threatened national security in the first place? What were the acts? What were the reasons that you thought national security could be harmed? So yes, ABCD will succeed. A is the correct option. Okay. Question number 7. Government of India introduced farm bills that sparked widespread public debate. Television One, a news channel known for its independent reporting, critical analysis, aired several segments highlighting the potential negative impact of the policy on farming sector. The ruling party and its supporters called its coverage as anti-establishment and an attempt to undermine the government's credibility. As a result, Ministry of Information denied security clearance to prevent the channel from broadcasting. अब ये डिसीजन चैलेंज हो गया है। सेम थिंग मीडिया वन के साथ यही हुआ था एग्जैक्टली जो टेलीविजन वन के साथ हुआ है। Okay, so coverage was a legitimate exercise of press freedom, that the denial of security constitution clearance is an unconstitutional restriction on their right of free speech. Decide whether the denial of security clearance is an unconstitutional restriction on right to free speech. Is it? तो हाँ, denial to prevent or denial to prevent television from wrongfully criticizing government policy, क्या होगा इसका आंसर? You tell me. डिनाइल किस चीज का है? गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने के लिए डिनाई किया गया है। आप साफ साफ कह रहे हो कि गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है, इसलिए आप डिनाई कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, राइट? दे आर नॉट प्रो गवर्नमेंट, दे आर अगेंस्ट गवर्नमेंट, दे आर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, इसीलिए तो लाइसेंस डिनाई हुआ है और ये गलत बात है। तो ए सही आंसर होना चाहिए। ओके, A should be the correct answer. A is actually the correct answer.
Question number 8. As per the information provided in the passage, which of the following is correct? सही कौन सा है? Which of the following is correct? Press has a duty to speak truth and present government with hard facts, enabling them to make choices that prepare democracy in the right direction. सही है ये, ठीक है. The restriction on the freedom of press compels government to think along the same tangent. गलत है ये. In a significant judgment, the Supreme Court ruled against the telecast ban imposed by the Union government on a Pakistani news channel. That's also incorrect. So A is correct. A is the only correct option. A is the correct option. D कैसे हो गया correct option? गलत है वो आंसर. A is the correct option. प्रेस की ड्यूटी है सच बोलने की और गवर्नमेंट को प्रेजेंट करने की विद हार्ड फैक्ट्स. Yes. Sorry, present the government. Oh no. Present the citizens. I made a mistake. Not government, present citizens with hard facts. Okay, ताकि डेमोक्रेसी राइट डायरेक्शन में जा सके. गलत पढ़ लिया मैंने, तीनों ही गलत हैं. D is the correct option. पाकिस्तानी न्यूज चैनल नहीं है. रेस्ट्रिक्शन फ्रीडम कंपेल नहीं करता है गवर्नमेंट को. मतलब फ्रीडम जो है प्रेस का वो कंपेल करता है गवर्नमेंट को कि वो सेम टैंजेंट पे थिंक करे, क्योंकि यू नो पीपल आर बिकमिंग मोर अवेयर. एंड ए आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये क्यों गलत है, कि हम सिटीजन्स को हार्ड फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को नहीं कर रहे हैं. तो तीनों ही गलत हैं. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सी सिटीजन है यहाँ पे. Okay, now that is it for today, guys. Everyone knows that we have launched a comprehensive course for CLAT 24. We have also launched a course for CLAT 25. CLAT 24 और 25 दोनों के ही courses run कर रहे हैं. अब सिर्फ 6 months रह गए हैं CLAT 24 के एग्जाम में. डेट्स अनाउंस हो चुकी है. टाइम है टू बकल अप एंड टू फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि अब हर चीज़ रेलिवेंट है. न्यूज़पेपर में आने वाली हर इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है, हर एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट है, कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक है वो इमीडिएटली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एग्जाम में आ सकता है. जैसे ही नोटिफाई होता है एग्जाम, जो भी कुछ हो रहा है दुनिया में वो करंट अफेयर्स, लीगल, सबके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है. अब यहाँ पे ज़रूरी है कि आप इस तरह के सेशंस को रेगुलरली अटेंड करें, ताकि आपको पता चलते रहे कि क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या नहीं. अगर आप खुद से जाएंगे ढूंढने ये सब कुछ, तो इतना टाइम लग जाएगा, आप इतना कंफ्यूज हो जाएंगे. right? So the best way to segregate the material you are studying from is to attend these sessions regularly. If you wish to subscribe, there's still time. You can still catch up with the students who have worked very hard. Right from your syllabus procuring to the last minute revision and the last minute preparation, everything will be catered to by this individual course. The only thing that you need to do is subscribe to the course and you are set till the exam. And not just CLAT, it caters to all the other non-CLAT exams as well. JAMIA, ALET, QET और MHCT, SLAT, सारे के सारे एग्जाम्स इस अकेले कोर्स से प्रिपेयर हो जाते हैं. राइट. सो गाइज, आई शैल सी यू वेरी सून. तब तक सब अपना ख्याल रखेंगे. हम फिर मिलेंगे और इन पैसेज प्रैक्टिस के सेशंस को आप अटेंड करिए, ये बहुत ज़रूरी हैं. आई शैल सी यू. बाय बाय. थैंक यू सो मच.